Hi everyone, hope you're doing well. So today in this video, I'll tell you about tax slab rates for old tax regime and new tax regime for the assessment year 24-25 and 25-26. And also I'll show you calculation of how to calculate taxable income and tax liability. Okay, so without wasting any time, let's start. So इनकम टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एंड 25-26 क्योंकि बोथ असेसमेंट ईयर में टैक्स स्लैब रेट का कोई चेंजेस नहीं हुआ है. ओके, सो बोथ आर सेम. So first I'll tell you about old tax regime for financial year 23-24 and financial year 24-25. That means assessment year 24-25 and 25-26. Okay, so first 2,50,000 का ऊपर taxes nil. Next 2,50,000 to 5 lakhs मतलब 2,50,000 का ऊपर tax is 5%. Okay, that means 12,500. Next 5 lakhs to 10 lakhs, that is जो 5 lakhs है 5 lakhs to 10 lakhs मतलब 5 lakhs का ऊपर 20%, which is 1 lakh. Okay, and above 10 lakhs का ऊपर 30% slab rate. Okay, so ये है slab rate for old tax regime. And इसके ऊपर you have to add a surcharge. If your taxable income is 50 lakhs to 1 crore, then you have to add 10% surcharge. 1 crore to 2 crore, 15%. 2 crore to 5 crore, 25%. And above 5 crores, 37% surcharge you have to add. Okay. And after that, you have to add ESES, higher an ESES, which is 4%. So income tax plus surcharge, and then you have to add another 4% for higher ESES के लिए. Okay, each and ESES के लिए. Then you will also get the rebate under section 87A. If your taxable income is up to 5 lakhs, then you will get rebate under section 87A 12,500. Okay, मतलब up to rupees 5 lakhs you don't need to pay any taxes क्योंकि आपको rebate मिल जाता है under section 87A, which is 12,500. ठीक है. Next is new tax regime for financial year 23-24 and 24-25. So up to rupees 3 lakhs tax is nil. मतलब for new tax regime up to 3 lakhs you don't need to pay any tax. 3 lakhs to 6 lakhs 5% tax आपको pay करना है. 6 lakhs to 9 lakhs 10%. 9 lakhs to 12 lakhs 15%. 12 lakhs to 15 lakhs 20%. And above 15 lakhs 30%. Okay. And न्यू टैक्स रिजम किसके लिए है? न्यू टैक्स रिजम इज फॉर दोज जिसका इन्वेस्टमेंट नहीं है. ओके, डिडक्शन नहीं है, देन आपके लिए न्यू टैक्स रिजम इज बेटर. अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका डिडक्शन है, इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग लोन है, देन यू हैव टू ऑप्ट ओल्ड टैक्स रिजम. सो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 न्यू टैक्स रिजम हो जाएगा आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजम. फर्स्ट आपको न्यू टैक्स रिजम दिखाई देगा जब आप आईटी रिटर्न फाइल करोगे. And if you want to opt, अगर आपको old tax regime चाहिए, then you have to opt into old tax regime. आपको old tax regime में opt in करना पड़ेगा. Okay. So after that, surcharge add होगा 50 lakhs to 1 crore 10%, 1 crore to 2 crore 15%, 2 crore to 5 crore 25%, and above 5 crores 25%. And then again आपको 4% sales add होगा. And rebate आपको मिलेगा under section 87A में up to rupees 7 lakhs के ऊपर आपको रिबेट मिलेगा, which is 25,000. That means new tax regime में up to rupees 7 lakhs you don't need to pay any taxes because आपको डिडक्शन आपको रिबेट मिलेगा under section 87A 25,000. ठीक है. So old tax regime में आपका रिबेट है 12,500 and new tax regime में 25,000. So अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, then new tax regime is better for you. Okay, deductions अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, so you will get deduction. Then आपका old tax regime is better for you. Okay, now I will show you a calculation. So यहाँ पर we want to calculate taxable income and tax liability. Okay, under old tax regime and new tax regime. So यहाँ पर income tax salary I have taken 20 lakhs. Okay, after that deduction under 1013 है, मतलब 1010 का जो डिडक्शन है 2,15,000 लेस हो जाएगा. देन 17,85,000
आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 डिडक्ट होगा, प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉई 2400 जो एक्चुअल पी टैक्स यू हैव टू डिडक्ट, एंड देन नेट सैलरी इनकम आ जाएगा. ओके, after that if you have any house property, if you have taken any loan to construct or purchase any house property or flat, then आपको you will get deduction under section 24B. हर साल आपको अप टू 2 लाख तक डिडक्शन मिलेगा फॉर इंटरेस्ट ऑन एचबीएल. ओके, सो आपको जो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगा, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा. ओके, सो यहाँ पर सपोज 2 लाख इसका इंटरेस्ट ऑन एचबीएल है, and you can set up your house property loss from your salary income. Okay, so house property loss का जो house property का जो loss है you can adjust with your salary income, so आपका gross total income कम हो जाएगा. then business profession है 1 lakhs and other sources है 50 lakhs, so total net जो total income है 16,82,600. okay, then आपको chapter 6A का अंदर deduction मिलेगा under old tax regime. So 80C में maximum 1,50,000, 80CCD2, employers contribution to NPS, mediclaim 20,000, ये तीनों लेस होने के बाद नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 14,62,600. ओके, फॉर ओल्ड न्यू टैक्स रेजिम में फॉर सेम डेटा के लिए, फॉर अगर सेम डेटा है, सो न्यू टैक्स रेजिम में क्या होगा, सैलरी इनकम इज 20 lakhs, देन आपका कोई भी सेक्शन 10 का डिडक्शन नहीं है, नॉट अलाउड. ओके, सो यहाँ पर 2 lakhs आ जाएगा, एंड फ्रॉम फिनेंशियल 23-24 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा अंडर न्यू टैक्स रेजिम, सो 50 lakhs आपको लेस हो जाएगा, देन 19,50,000. आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन एचबीएल हाउस बिल्डिंग लोन का ऊपर जो इंटरेस्ट, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर न्यू टैक्स रेजिम. देन बिजनेस प्रोफेशन है 1 lakh, अदर सोर्सेज 50,000, सो टोटल नेट टोटल इनकम कितना 21 lakhs. ओके, एंड देन चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर न्यू टैक्स रेजिम except 80CCD2 employers contribution to नेशनल पेंशन स्कीम एंड अग्निवीर फंड में अगर कोई आपका इन्वेस्टमेंट है, देन आपका डिडक्शन मिलेगा अंडर चैप्टर 6A. ओके, सो इस केस में ओनली 80CCD2 है, ओनली 80CCD2 है, सो आपको ओनली 50,000 डिडक्शन मिलेगा. So 21 lakhs minus 50,000 हो गया 20 lakhs 50,000. Now you have to calculate tax under old tax regime and new tax regime. Okay, so for tax calculation you don't need to go to anywhere, you have to go to income tax portal and you will be able to compute taxable in very easy way. Okay, so यहाँ पर एक basic calculator है, यहाँ पर देखिए assessment year है, taxpayer you have to select, resident है यहाँ पर, एंड जस्ट आपको यहाँ पर एनुअल टैक्स, टोटल एनुअल इनकम पुट करना है एंड टोटल डिडक्शन, देन आपको अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम में कितना टैक्स है आपको आ जाएगा, यू कैन कंपेयर. ओके, एंड सेकेंड इज एडवांस कैलकुलेटर, यहाँ पर आपको एडवांस पूरा डिटेल में है. ओके, फर्स्ट सपोज आई वांट टू कैलकुलेट फॉर ओल्ड टैक्स रेजिम, तो सिलेक्ट ओल्ड टैक्स रेजिम, सिलेक्ट असेसमेंट है 24-25, then taxpayer category you have to select, जो मेरा category है individual, residential status, okay, resident, then you have to select the age below 60 years, 60 to 79 years which is for senior citizen, and 80 to above, 80 and above super senior citizen. okay, so यहाँ पर आपको मेरा केस में below 60 years है, then आपको यहाँ पर net salary income लिखना है, जो मेरा old tax regime में था 20 lakhs, आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000. ओके, सो यहाँ पर जो नेट सैलरी इनकम है आपको ये सैलरी इनकम, ग्रॉस टोटल सैलरी इनकम लेस आपको सेक्शन 10 का डिडक्शन लेस करके जो नेट है वो फिगर आपको वहां पर पुट करना है, विच इज 17,85,000. ओके, 17,85,000, देन 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स इज 2,400. ओके, बस हो गया. देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मेरा ओनली इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब अप टू 2 lakhs तक डिडक्शन मिलेगा, 2 lakhs आपको यहाँ पर शो करना है. ओके, 2 lakhs इंटरेस्ट मिलेगा. देन कैपिटल गेन इनकम है मेरा 50,000, सो कैपिटल गेन इनकम है मेरा 50,000. ओके, एंड अदर सोर्स बिजनेस प्रोफेशन इनकम है मेरा, सपोज अदर इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 lakh.
ओके सो टोटल आ गया ग्रॉस टोटल इनकम 16,82,600 16,82,600 देन आपका 80C का जो डिडक्शन है सो मेरा टोटल डिडक्शन कितना है 80 चैप्टर 6A में 2,20,000 सो डिडक्शंस 80C में है 1,50,000 ओके देन 80CCD2 50,000 एंड आफ्टर दैट मेडिक्लेम है मेरा 20,000 ठीक है and if you have other deduction you have to put the figure under respective heads okay so total मेरा taxable income आ गया 14,62,600 and आपको यहाँ पर automatically tax calculate हो जाएगा okay which is so यहाँ पर total tax liability 2,51,280 2,51,280 and e says आपका आ जाएगा 10,051 okay so 2,61,331 okay so you can calculate your taxable you can calculate your tax liability from income tax side okay सपोज मुझे न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्ट करना है सो न्यू टैक्स रेजिम कैलकुलेट करना है तो सिलेक्ट न्यू टैक्स रेजिम एंड ऑल आर सेम रहेगा यहाँ पर आपको 20 lakhs होगा ग्रॉस सैलरी क्योंकि सेक्शन 10 का डिडक्शन तो नहीं होता है अंडर न्यू टैक्स रेजिम स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 इज ओके लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन एचबीएल लोन कुछ नहीं होता है सो 0 आफ्टर दैट कैपिटल गेन 50,000 1 लाख बिजनेस प्रोफेशन ठीक है देन आपको यहाँ पर डिडक्शन में आपको क्या मिलेगा देखिए ओनली आपको 80CCD2 मिलेगा जो है आपका 50,000 ठीक है सो यहाँ पर मेरा जो टैक्सेबल इनकम है 20,50,000 and tax on normal rates 3,15,000 plus 4% e sales so आ जाएगा 3,27,600 okay so in this case आपका ओल्ड टैक्स रिजिम इज बेटर क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है डिडक्शन है ओके सो इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट देन यू विल गेट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A आपको एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10 इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग लोन सबको ओल्ड टैक्स रिजिम इज ऑलवेज बेटर ओके so you can calculate your tax liability from income tax department okay this is the easy way to calculate your tax okay guys now you can also download here so okay guys hope you understand and if you want to learn income tax TDS Excel GST PF and ESI ROC advanced ROC tax audit then you have to go to my website hamirsmanlearninghub.com okay and you can join the courses as per your requirement. For some courses you will get lifetime support through Telegram group. For some courses you will get 6 months support through WhatsApp group. For some courses you will get lifetime video validity. For some courses you will get 1 year video validity. Okay, we are not only selling courses, we are also providing support because I have a mission to help 1 lakh professionals and students find their path to success. That's why I have created Hamid Smart Learning Hub Academy. So अगर आपको tax expert बनना है then you can join the courses as per your requirement. Okay guys, so अगर आपको वीडियो अच्छे लगे so like and share जरूर करना and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.